So very good afternoon to all and welcome all to today's session. So I'm sure my voice is audible. Please type yes on the chat box. So we'll be just starting the session in a couple of minutes as we are just waiting for a few more participants to join in. So very good afternoon to all and welcome all to today's session. And today we will be explaining about the Nifty 50 weekly options expiry, followed by the support and resistance, which are the top hot sectors which are moving right now, and how will be the stocks and the index performing. So if you have any queries, anything, then you can put in the chat box. So those who are attending this session from our WebEx channel, they can put in the chat box there in the section mentioned there. And those who are attending this session from our YouTube channel, they can put in the chat, live chat box regarding the support and resistance. So today, this is the report that our research analyst published today in the morning, and this is about the Nifty 50 weekly option expiry report. So we have seen the increase in the OI of OI, that is your open interest, of 0.2% and a decrease of 0.1%, indicating that is a short buildup. In the bank Nifty, we are looking ahead for the short covering right now. Now talking about the Nifty 50 open interest distribution, then the highest
OI on call side is seen at 25,200 strike followed by 25,100 and 25,000, which may act as a immediate resistance. And talking about on the support side, the highest OI concentration on put side is seen at 24,800 strike followed by 25,000 and 24,900. Now, this is the Nifty volatility report and the Bank Nifty, and the strategy for this upcoming week, that is for the 24th October expiry, that's called your bull call spread strategy. So we are recommending it here. That is, I mean, buy this Nifty 50 25,000 call at the range of 145 to 165 and sell at 25 250 call, that is 65.75. So break even is 25,000, the risk is minus 2,200, and the reward is 4,050. So this is the payoff graph that on the right of your screen, that how the break even will going to be calculated. And if you are following with the spread strategy, then in the spread strategy what happened, that you are simultaneously buying the call also and selling the call also, and your margin requirement will be approximately like between 20 to 20 to 30,000 your margin, this works actually. So now with this, I'll hand over the session to Karan Pai, who is the research analyst, and he'll be walking you through the this on the this Nifty 50 expiry, followed by the support resistance and the OI data, and about the sector's outlook. Karan, all over to you. Yeah. Uh, yeah. Thank you, Rohit. Thank you for the briefing. And before running through Nifty, I just want to show you something. So अगर आप देखोगे Asian markets जो है फिलहाल थोड़े pressure में आ गए हैं. So this morning, if you see, they had a very positive open, but as we moved into the session after China announced its banking policy, uh, yeah, after China announced, sorry, not the banking policy, the real estate policy, the housing policy, and all those things, as it started giving out more updates, uh, the investors they don't seem to be liking it. So if you see right now, most of the Asian markets they have actually turned negative. So अगर आप अभी अगर चाइना देखोगे तो 0.83% डाउन है, वहीं पर कॉस्पी इज डाउन अबाउट 0.04%. HSI जो Hang Seng है that is down 0.4%, and these most of these indices they have retraced. I mean they have fallen from their session highs. So a bit of negative sentiment coming in from there. So now if you go on to Nifty, so again यहाँ पर something similar to the Asian markets have happened, and for a very good reason. So जब भी हम लोग निफ्टी का एक possible open या open हम लोग gauge करने की कोशिश करते हैं, correct? So we look at the Asian market. So if you see Nifty आज के दिन में एक around 56 points positive open हुआ था. If you look from yesterday's close and today's open, just give us a second. या सो प्रीवियस क्लोज एंड आज का अगर ओपन देखेंगे तो एक थोड़ा एक पॉजिटिव ओपन है उसमें, एंड फ्रॉम देयर यू सी द सेशंस हाई एंड द सेशंस ओपन. ऑलराइट, उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट का फर्क है, लाइक लिटरली 2 पॉइंट का. सो इट इज मोर ऑफ अ ओपन इक्वल टू हाई कैंडल पैटर्न टुडे, एंड वहां से आप देख सकते हो कि इफ यू सी फ्रॉम द हाई अगर इंडेक्स कितना गिरा है, दैट इज approximately 260 points, 240 250 points के आसपास के आसपास है. सो ऑल इन ऑल एक थोड़े पॉजिटिव ओपन के बाद इंडियन इक्विटीज में भी एक थोड़ी गिरावट आई है. एंड if you look at the bigger picture right now, एक जो स्ट्रीक हुआ था निफ्टी में कंटिन्यूस फॉल का 6 दिनों का, अभी वी सीम टू बी अप्रोचिंग दैट लो. सो वो जो लो था वो 24,700 के पास था, एंड नाउ वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू द 24,700 जोन. अभी यहाँ से क्या होगा? सो बिकॉज यू नो टुडेस कैंडल इज सच अ bearish candle. I'll just make this the 20-day EMA. Yeah, so because today's candle is such a bearish candle, there is a chance कि आज के सेशन का जो हाई है आगे जाकर वो थोड़ा रेजिस्टेंस बनेगा. So somewhere around 25,000 to 25,100 एक जोन बनेगा. एंड देन इफ यू सी द नेक्स्ट लेवल दैट कम्स 2 दिन यहाँ आज के 2 दिन पहले का जो हाई था दैट वाज अराउंड
180 25,200 के आसपास का जो लेवल था, एंड वहीं पर फिलहाल हमारे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो खड़े हैं. सो अ लॉट ऑफ क्लस्टर अराउंड द 25,200 जोन. वहीं पर नीचे जाते टाइम वी probably feel the previous swing low that was 24,800, that could act, sorry, not 24,800, 24,695 or 24,700, that could act as a bit of support. अभी अगर आप देखोगे तो दिस इज ऑल स्पॉट लेवल. तो स्पॉट लेवल में अगर आप देखोगे अभी 782 चल रहा है. सो यहाँ पर अनदर 80 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड वी माइट सी सम सपोर्ट कमिंग इन. अभी ये थोड़ा क्रूशल हो जाता है बिकॉज इट हैज बीन 2 times दैट द इंडेक्स हैज एक्चुअली एक्टेड एज अ बिट ऑफ सपोर्ट. इसके आगे अगर हम लोग जाए तो या सो अगर इसके आगे हम लोग अगर थोड़ा देखें कि इसमें सपोर्ट कहाँ पर आ सकता है, देन द नेक्स्ट बिग लेवल कम्स अराउंड 24,500. Now that we have, now that we know that the bigger picture is a bit bearish once it breaks below the 24,700 mark, we'll look for we look on the intraday charts as to what the indices are actually showing. So Karan, as you mentioned that means as we see in the chart ki that Nifty 50 आज open हुआ था 25,000 पे. Right now it is trading around this 25 24,700. So if you can just showcase कि आज intraday पे levels पे, क्योंकि आज expiry है, so almost all premiums will get zero. So अगर किसी को intraday में अगर trade करना है तो what can be the levels that can be decided, because looking at the charts right now it is showing as a kind of like a downtrend, but एक RSI लेवल पे और चार्ट्स के लेवल पे हम लोग आज क्या देख सकते हैं? Yeah, so it's interesting you asked that, Rohit, because if I remember हमारे पिछले वेबिनार में when I was explaining one of the indices, I had pointed out about the index being close to the 38.2% retracement level. एंड अभी अगर आप देखोगे तो वो लेवल जो है वो फेल हुआ था ब्रीच करने को, एंड देन वहां से इट इज बिन कमिंग डाउन. Now, if you look at the intraday charts, ये जो morning का candle था that formed around 9:15, that broke the 24,900 level, and that was like a signal for further fall, and that is exactly what has happened. If you see right now again intraday charts पर भी जो 24,700 का जो level है वो थोड़ा crucial बता रहा है. And once it manages to move below that 24,500 followed by 24,100 is where we could see. And if you look at the strength, I mean the momentum, जैसे आपने पूछा कि RSI फिलहाल क्या बता रहे हैं. So RSI पिछले कई दिनों से say from 14th August it was moving between 50 and 70. आप देखोगे 50 के नीचे वो ब्रीच नहीं कर रहा था, बट दिस मैसिव फॉल हैज प्रोबेबली लेड टू अ रेंज शिफ्ट. रेंज शिफ्ट में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इट मैनेज टू ब्रेक बिलो द 50 लेवल एंड देन अभी उसके नीचे ही चल रहा है. आज का प्रीवियस 2 दिन का भी अगर आप देखोगे, भले ही मार्केट थोड़ा ऊपर गया था, बट द RSI डिड नॉट हैव द मोमेंटम टू गो अबव 50. एंड देन टुडे आज के जो फॉल के बाद द RSI इज अगेन ड्रिफ्टिंग लोअर. सो मोमेंटम कहीं ना कहीं इसमें बता रहा है कि देयर इज अ बिट ऑफ वीकनेस इन द आई मीन द मोमेंटम इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एक वीकनेस है. कमिंग ऑन टू द शॉर्ट टर्म चार्ट्स, जैसे मैंने अर्ली में आपको दिखाया, तो प्रॉपर करेक्शन, आई मीन ये फॉल उसने थोड़ा करेक्ट किया एंड देन रिट्रेस किया, नॉट से करेक्ट किया बट रिट्रेस किया, एंड देन फ्रॉम देयर इट इज गोइंग लोअर. सो वो जो एक लेवल है थोड़ा क्रूशल हो जाता है. एंड देन इफ यू गो ऑन टू इवन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स, आपको तो इंट्राडे चार्ट्स के लिए सॉरी इंट्राडे ट्रेड्स के लिए आपको प्रॉपर रेजिस्टेंसेस मिलेंगे. सो 24,900 जो है at this point seems a bit far-fetched, but certainly 24,900, 24,850 का जो जोन है वो थोड़ा रेजिस्टेंस बनेगा. एंड नीचे में एज एक्सपेक्टेड समewhere around 24,600, 650, सॉरी 700, 650 वहां पर सपोर्ट बनते हुए हम लोग को दिखाई दे सकता है. So what we'll do now is quickly go to the NSE India website, and we'll check what the white data is actually suggesting. So मैं Nifty पर जाऊंगा and then I'll click on option chain once this page loads up. And by default it will show 17th October, that is today's expiry. And to the left hand side we have calls, to the right hand side we have puts. So जैसे जैसे हम लोग scroll करेंगे we should see some sort of concentration. So
25,000 पर थोड़ा कंसंट्रेशन है. सो दिस लेवल जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे थे 24,990, सॉरी 933 का. So around that zone, 25,000 पर around 13 lakh का OI है कॉल में. So the probability of market breaking above 25,000 at this point is a bit difficult. वहीं पर अगर हम लोग नीचे की तरफ देखें तो we'll see where the OI accumulation is. So somewhere around 24,750, 24,700 वहां पर थोड़ा accumulation है. And if you see the cumulative OI that is there around the 24,700 mark, that is about 12-15 lakhs, 12-15 lakhs के बीच में है. So a pretty strong open interest build up there. So broadly हम लोग इसमें से ये बोल सकते हैं रोहित कि somewhere around 25,000 on the upside and 24,700 on the downside, वहाँ ये एक broader range हो सकता है मार्केट का. So यहाँ तक अगर किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो प्लीज बता दीजिए. So we are having a query from our YouTube channel that if you can just showcase your view on the this ITC कि ITC के एक levels क्या हो सकते हैं in terms of like the support resistance if I am taking the positional like the long term or the short term actually. So see हम लोग आपको strictly speaking levels नहीं दे सकते, but we can do something what we are doing on the index right now. So based on horizontal supports and resistances, we will be able to tell you where the support lies as per the chart, where the resistance lies as per the chart. So ओवरऑल अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर जो एक रिसेंट स्विंग लो बन रहा है या जो एक रेड फ्लैग लेवल जिसे मैं बोल सकता हूँ दैट विल फॉल अराउंड 487, 490, 487 के पास. एंड देन अगर उसके नीचे वो ब्रीच कर रहा है देन द मेजर लेवल ऑन द डाउन साइड इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 477, 470 के आसपास का. एंड ऑन द अपसाइड the recent swing high जो अभी के करेक्शन का swing high है that is also multiple touch point level. So around 500 से लेके 503, 505 तक is where we might see the resistance is coming in. So what I would strongly suggest is stock specific questions हम लोग ये sessions में will not cover, but fine. अगर आपको कुछ query है, कुछ पूछना है तो हमारे मेल आईडी है रिंग वाला, उसमें आप डाल सकते हो. एंड we'll try and get you back, and we'll try and get back to you. But what you guys can do on your own is कि हम लोग ने जितने भी आपको tools जो दिए हैं, जो tools हम लोगों ने जितने भी आपको explain किए हैं, based on that you could send us research and we can see if we find the time then हम लोग आपको देख सकते हैं, वो आपका research जो है वो हम लोग देख सकते हैं. We can tell you what is wrong here, what is right here in the when we are covering that particular subject in our webinars. So that is something that we can do. So आपको अगर कुछ आपने कुछ एक interesting कुछ आपने find out कर लिया है in one of the charts, कुछ भी हो कोई भी चार्ट हो, वो चार्ट में आपने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फाइंड आउट कर लिया है, देन यू कैन put it to us on chat, in the mail, and we'll take it from there. Now we'll just quickly run through what are the sectors that are performing, what are the sectors that are underperforming at this moment. So अगर मैं sectors की बात करूँ तो broadly breadth जो है वो negative लग रहा है at this point. Of the 12 NSE sectors जो आप यहाँ पर देख रहे हो, now this is an internal software, आपको अगर करना है you can definitely go on to the NSE website and वहाँ से आप कर सकते हो. So breadth जो है वो ये point पर negative लग रहा है, and realty and auto they seem to be the ones that are taking the massive beating. Autos में अगर आप देखो तो 3.2%. Of course this is a 15-minute delayed data, but nonetheless autos and realty they seem to be taking the beating a lot today. वहीं पर निफ्टी आईटी जो है वहां पर हमें थोड़ी एक अप मूव या थोड़ा एक आउट परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द इंडेक्स दिखाई दे रहा है ये पॉइंट पर. नाउ विल गो ऑन टू द निफ्टी 50 स्टॉक्स. या सो ऑफ द 50 स्टॉक्स अगर आप देख सकते हो कि 39 स्टॉक्स जो है ये पॉइंट पर दे आर इन द रेड. सो ब्रेथ जो है मार्केट का वो थोड़ा एडवांस डिक्लाइन ब्रेथ जो हम बोलते हैं सेंटिमेंट गेज जो होता है वो थोड़ा बेयर्स के साइड पर है. एंड वहीं पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ ऑफ द 50 स्टॉक्स ओनली 10 स्टॉक्स दे सीम टू बी गेनिंग टुडे. एंड अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, सो ऑटोज जैसे हम लोगों ने मेंशन किया था समथिंग लाइक बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, मेजरली ये
टू व्हीलर्स जो है उनमें थोड़ी ज़्यादा गिरावट है, बट नंदरलेस समथिंग लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा दे ऑल्सो सीम टू बी ट्रेडिंग इन द रेड टुडे. एंड आउट परफॉर्मर्स की अगर हम लोग बात करें, या जो आज के सेशन में जो स्टैंड आउट कर रहे हैं, दैट इज इन्फी अगर आप देखो 1.6% पॉजिटिव है. एसबीआई जो है वहीं पर इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इज ट्रेडिंग 1.2% हायर. समथिंग लाइक हिंडाल्को, टेकएम. सो ऑल इन ऑल ये जो आईटी स्टॉक्स है, जैसे समथिंग लाइक इन्फी, टेकएम, they seem to be performing today. And then there are a few PSU banks जैसे SBI हुआ, then metal वाले जो हैं जैसे हिंडाल्को हुआ, they also seem to be making the list, but ITs they seem to be the stronger one today. So Karan, if you can just collaborate with the two charts, that is on the Bank Nifty and the Nifty 50, and showcasing कि क्या trend देख सकते हैं आने वाले coming weeks में, because this अभी जैसे आने वाले कुछ ही दिन में like Diwali will be there, so Diwali motor trading is also coming. So एक बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का ब्रॉडर वे में हम लोग क्या लेवल दे सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट वीक विल बी लास्ट. एंड अगेन जैसे कि सेबी ने नया रूल लाया है कि दैट इज ओनली निफ्टी 50 एक्सपायरी विल बी देयर आफ्टर 20th November, and bank nifty and fin nifty expiry will be not there. So if you can just showcase about the bank nifty and the nifty 50 both charts, looking at the moving average crossover part. Yeah. So दोनों चार्ट पर आप एक ही देख सकते हो कि there is 513 and 20 है, सॉरी 21 करना है इसको. So 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो है वो प्लॉट किए हुए हैं. एंड yeah, but आप लोग को अगर चाहिए you can stick to the 20 period moving average also, but for me 21 works a that bit better. So chart structure अगर आप देखो रोहित broadly, so हम लोग को थोड़ा similar लग रहा है. So you see that there was a major fall in both the indices, and both of them started falling from around 27 September, and then एक slight recovery हुई जिसमें बैंक निफ्टी विजुअली तो थोड़ा ज़्यादा आउटपरफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है, but then again today both of them are down. But if I were to do a comparative study just based on the charts, Nifty at this point it looks to be that bit more susceptible to a fall, because अगर आप देखो तो ये support के काफी close by है. And अगर ये support टूट जाता है जैसे हम लोगों ने पहले mention किया था, then the fall could push it lower probably towards 24,400 and all those levels. वहीं पर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो अभी भी वो रिसेंट स्विंग लो से काफी नीचे है. आई मीन सॉरी, काफी ऊपर है. इट्स क्वाइट फार ऑफ फ्रॉम द रिसेंट स्विंग लो. सो ऑल इन ऑल चार्ट स्ट्रक्चर दोनों का थोड़ा नेगेटिव लग रहा है. एंड if you see, both of them have found resistance somewhere around the 21-day exponential moving average. So all in all, and दोनों में हम लोग को एक थोड़ा एक रेंज शिफ्ट भी दिखाई दे रहा है. So with regards to the RSI. So all in all थोड़ा weakness इसमें build up होते हुए दिख रहा है हम लोग. So करण RSI का जो लेवल है निफ्टी 50 का और दिस बैंक निफ्टी का, तो अगर आप इंट्राडे में अगर ये चार्ट दिखे, क्योंकि आई थिंक ये अभी पोजिशनल चार्ट्स है, सो इंट्राडे में इफ यू कैन जस्ट पुट दिस इंट्राडे लेवल, काइंड ऑफ 30 minutes would be also good. So RSI का जो लेवल है वो अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि दैट इट इज ऑन द ओवरसोल्ड जोन राइट नाउ, खासकर अपना दिस निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी बोथ. सो बैंक निफ्टी का ऐसा वो कवर कर रहे हैं, बट दैट इंट्राडे लेवल्स पे अगर देखा जाए तो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर तो हो चुका है बैंक निफ्टी में. सो कैन वी स्टिल फील लाइक दैट इट कैन बी द डाउन ट्रेंड, या एक बैंक निफ्टी का लेवल्स क्या आ सकता है इस पे? सो रोहित, एक मैं इसमें बोलूंगा the bigger charts or the longer term charts, they are showing a bit of weakness. Now this might not be one of the best trend lines you have seen, but nonetheless एक sentiment gauge के लिए this is more than enough. So अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका एक upward sloping trend line जो है वो इंडेक्स ने आज सुबह ही निकाल दिया था. ओपन होते से ही आई थिंक इट पुश्ड इट लोअर, या 9:15 के कैंडल में ही निकल गया था. So एक थोड़ी नेगेटिविटी है, but overall if I was to look at the chart from a neutral point of view, not from the trading point of view, I would say अगर इसमें एक पुल बैक भी आता है तो the resistance levels are going to be somewhere around 51,700, 51,900. And downside में once it manages to breach below 51,000, 51,030, 51,050 zone, जो नीचे का लेवल है टूवर्ड्स 50,000
800, 50,000, 50,300 वो open up हो जाते हैं. Now this is a broader view. There are multiple events that can happen. There are multiple things that could happen that could go wrong or change what has gone wrong. So उसका भी effect जो है एक cumulative आते हुए हम लोग को इसमें दिखाई देगा. But nonetheless, as of now, the charts are saying that there is a bit of weakness. So for the bank nifty specifically, जैसे कि अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है. So can you show us on the Nifty 50 this NSE Nifty 50 this website कि that कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो पुल डाउन कर रहे हैं बैंक निफ्टी को? That can be done. So NSE website पर जाकर if you just click on market data equity. So meanwhile you open the NSE site, I would request the all the participants जो attend कर रहे हैं हमारे YouTube channel से and Webex channel से to post your support and resistance level of the bank nifty की what do you think? So we'll just take the 30-second pause here. Meanwhile, Karan showcase the about the bank nifty sectors outlook. So we'll just wait for the 30 seconds that you can type your the support and resistance of the bank nifty. कि आज का क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यू आर फीलिंग ऑन दिस बैंक निफ्टी? ओके, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आई बी लुकिंग एट something like 51,700 to act as a resistance, and नीचे में जो immediate level है that is around 51,000. रेंज आई नो थोड़ा बड़ा है बिकॉज आज अगर आप देखो कि कैंडल साइजेस थोड़े बड़े हैं, सो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस जो है ये पॉइंट पर आपके थोड़े लंबे ही आएंगे. सो ये जो दो लेवल्स है ये थोड़े क्रूशियल रहेंगे आज के लिए, इज व्हाट आई सी ऑन द चार्ट्स. एंड द वंस दैट आर पुलिंग द बैंक निफ्टी डाउन, एनएसई के वेबसाइट पर जाकर अगर आप मार्केट डेटा पर क्लिक करोगे वहां पर यू विल बी एबल टू सेलेक्ट बैंक निफ्टी. सो समथिंग लाइक HDFC Bank, PNB, AU Bank, they seem to be putting a lot of pressure. And वहीं पर अगर आप देखो something like SBI, Federal Bank, IndusInd Bank, they seem to be holding on to their gains, especially SBI. Sorry, Federal Bank just turned negative. IndusInd Bank is also a bit negative, but something like SBI, that is the only stock that seems to be holding on to its gains. So SBI is the one who is trying to pull back the nifty, bank nifty, but rest other stocks I'll talk about. The rest other 12 stocks are pulling down the bank nifty, and majorly that is the HDFC Bank, PNB. So it can be the downtrend for the bank nifty अगर ये momentum चालू रहा. So Karan, if you can just showcase on the Bollinger Band charts that how the Bollinger Bands looking on the both bank nifty and the Nifty 50. Okay, so what I'll do is I'll switch over to Nifty and indicator में जाके I'll just apply Bollinger Bands. So आज भी एक थोड़ा sideways trend लग रहा है, that is looking at the Bollinger Bands, क्योंकि एक जो नीचे वाला band है that is again getting expanded, and the Nifty 50 the Nifty 50 showcasing this particular trend, but So those who don't know what Bollinger Bands are, I'm pretty sure that most of them might know, but किसी को अगर detail वगैरह कुछ चाहिए इसमें, then we'll come up with. I mean, we have a technical analysis session scheduled in the coming week, and we'll cover this part there in. About the Bollinger Bands concept. Okay. Thank you, Karan. So Karan, जाते जाते बस एक लास्ट अपना निफ्टी 50 का 15 मिनट पे चार्ट्स पे अगर इफ यू कैन जस्ट शोकेस द सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कि आज क्या देखना चाहिए हम लोग को? Yeah, so अगर रेजिस्टेंस की बात करूं on the 15-minute chart, best possible scenario seems to be somewhere around 24,930, and this is spot level. And नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टच पॉइंट लेवल आ रहा है अराउंड 24,700. So broadly, Rohit जो OI data बोल रहा है कि somewhere in between 25,000 and 24,700. That seems to be the broader range for the day. But Nifty 50 future is right now at 24,866, and अभी अगर जो spot level बात करें that is on the Nifty 50 it is trading around this 24,790. So एक थोड़ा 50 points का moment देखा जा सकता है based on the European market opens and how it will be. So
with this, if anyone is having any queries, anything, then you can drop in the chat box. We'll just take the 30 seconds pause here, and you can drop your questions here in the chat box. So majorly in our this YouTube section, we have run the poll, and majorly are saying that 100% people are saying that Nifty 50 will be downtrend today. So let's wait and see that how the Nifty 50 will be performing today. Seems like we don't have any queries on the Nifty 50 today. So we'll come back with the session on the next week, that is on the Fin Nifty and the Bank Nifty and Nifty 50 weekly expiry. So with this, I'd like to thank everyone for attending today's session, and thank you, Karan, for giving such a great insight on the OI data and the Nifty 50 option chain data, and followed by the important indicators. So thank you all for attending today's session. Thank you so much, and do